Thank you so much, Payalji. Good evening, everyone. Welcome to today's session on celebrating Environmental Wellness Day. So, today being a Green Day, I would like to thank Prem Jain Memorial Trust and especially the trustee Payalji to get all of us together to celebrate today's evening and the theme. Special thanks goes to our support partner, Access Colleges and Sattva Nation. I am the founder of Sattva Nation. It is a holistic wellness platform, and it is my pleasure to be a part of today's forum. Friends, I would like to share few details about why we celebrate Environment Day. The theme for this year is ecosystem restoration. Environment Day is celebrated to generate awareness of the environment and the nature. With the coronavirus outbreak and people being confined indoors, the environment and Mother Earth seem to have benefited slightly in the absence of human activities amid the coronavirus included lockdown. Nature is getting time for detox. Nature is getting time, its own space to get back and to nourish and flower. What does it mean? It is actually forcing us, all of us to think again that is the human actions are spoiling the nature? So that's what we are going to discuss today. And also as the theme for Premjan Memorial Trust, the mission I like to share with all of you. It's my pleasure to be associated with PGMT for a lot of platforms, but I really love the mission behind the post. Dr. Prem Jain started the trust with a vision and a mission to create green, sustainable environment and the green buildings. And it's an honor to have V. Suresh sir also today being a part of the session. Just a small addition, if I may, Please, Preeti, please, Payal ji. formed the trust after we lost Dr. Jain, so it was formed in his memory, and we continue working on the mission and the vision that he had while he was part of Indian Green Building Council. And Sureshji is driving it beautifully and has been part of Premjan Memorial Trust from day one. Actually, from the time that the thought began, he's been supporting us and been with us every step of the way. So I would like to thank him for that, and um, I'll hand it back to you, Preeti. Thank you. Thank you so much, Payal ji. I like to share a quick introduction of Ms. Payal Jain. Ms. Payal Jain is a founder trustee Prem Jain Memorial Trust and graduated summa cum laude from FIDM USA and returned home to start a career in fashion. She's a green crusader and, of course, a very well-known name in the fashion industry. In the past 2 decades, her label has become timelines, classic ensembles, with each creation a synthesis of rich Indian craftsmanship and textile heritage. Her passion for sustainability and love for Mother Nature reflecting through use of nature yarns, vegetable dyes, handloom textile, hand block printings and embroideries and ethniques and practices. So she has also been on board of Fashion Design Council for India, organizing India Fashion Week, taking Indian craft, textile and fashion to the world. She is a founder trustee, as I already mentioned, of PJMT and carries its mission to create awareness and advocacy about the environment with focus on sustainability through education. So thank you so much, Payal for getting all of us together today. Thank you, Preeti. No need for my introduction, frankly. Let's move ahead. Thank you. Thank you. Actually, this is for all those people, those who are watching us on Facebook Live. So it is important to know that who is the life force behind today's session. And Yes. of course, you carry the vision. You have the torch which Dr. Prem Jain had a dream about. So this is amazing to be a part of this dream which is coming true every single year. I'm grateful. Thank you. Thank you. Shall we ask Suresh ji to address the audience before we Yes, go please. ahead? Uh, would you like me to do that first, or maybe get a little idea on what the program is like, especially what the Green Gurukul on? If Preeti can very briefly talk about that before I do the opening remarks. Yes, Suresh That'll be sir. that'll be what exactly is in store and what when you, because I like the whole word.
it's a green conversation for students. I like the word green conversation students. So what exactly is I it? So Preeti can very briefly tell that, and then who are the people? About nearly about 100 people are there. Who are these 100 who are participating here? I know the speakers, so then it helps to for me to, yeah, Sure. very briefly. So, with your permission, sir, kindly allow me to share your introduction with all the lovely audience members because all these college students are I don't very think that is excited. needed. That is not needed. I think what is needed is we can very briefly tell the whole day. This is the first Green Gurukul event. So, what exactly is a fantastic concept? And if you can indicate the target group, how we are addressing all that, and then and how often you will have this regularity. If you are able to briefly indicate that, then I'll give my opening remarks. So Okay. may I come in here, Preeti? I think you Yes, might Yeah. need to talk about this. please, Payalji. For Uh, our audience members, it's important to know the Yeah. legendary V. Suresh sir, who is with us today. He is the chairman of India Green Building Council. Yeah. And V. Suresh sir is also the vice president of All India Housing Development Association and vice chairman to Construction Industry Development Council. So it's an honor to have you, sir. Thank Over you. to you, Payalji. Thank you, Preeti, and thank you, Sureshji, for being with us, for guiding us. The idea of Green Gurukul actually came about yeah, over a conversation with our Green ambassadors, which we regularly do. We constantly connect. I mean, for lack of better options at the moment on Zoom. So we have been meeting with them every few weeks and understanding what is it that students, today's architecture, design, engineering students are looking for. Yeah. I know there's a lot of stuff happening online. I know they're all studying online, and there's sort of a fatigue Yeah. with the amount of stuff that is being thrown at them online. So what they had suggested, and this came about in this conversation, was that they would like to be able to voice their questions, have conversations about sustainability, and ask industry members and those who are working in the industry, hands-on in the industry, not just in the academic space, but also in the real world, and be able to voice questions and get answers one-to-one. A lot of sessions that they have been attending, of course, they take away a lot, but they feel that maybe the pertinent questions have not been answered. So that was the thought behind Green Gurukul, and that this is our first Green Gurukul session. We have two of our Green ambassadors here today, and we are hoping to have a lot more from Access College. Dr. Ashish Malik has been kind enough to be part of this, and we have all the Access students. So I want to say thank you to all of you for logging in and welcome to PJMT. We hope there will be many more such conversations. As of now, we are thinking of doing one every 3 to 4 weeks on different subjects, and those subjects will emerge through these conversations. So the next subject will emerge through today's conversation. We don't know what that will be, but it will remain in the space of sustainability. Excellent. But going into a more holistic space, as Preeti said, sustainability is not just buildings, not just fashion, not just design. It is how you live. It is how you operate every single day. Yes. And we hope that you will take back this message from our session and incorporate sustainability into your daily lives. And please send us suggestions. We are open to hearing from you. We'd like to know what you think, what you want in the future, and we will curate these series accordingly. Thank you. Back to you, Preeti. Good. Very useful. So should I start, So we Payal? like to have your words of wisdom. All of Yeah. us are eagerly waiting. Yeah. What a great pleasure to address this wonderful audience. We are already 112 number in a short little time. It's swell. And even though this is my fourth event for the day, but I attach this as the most important event because we are addressing a very important target group. They're all the young ones, the next gen team of the professionals who are getting into the whole area of the built environment, and therefore addressing for the first Green Gurukul event. And as Payal rightly explained, the whole concept of trying to get it as a green conversation for students and what students would like to ask. Even though many events were organized by PJMT earlier, with many speakers of stature coming and talking, their own ability to interact and communicate must have a little lower on that. But from that point of view, it's a wonderful opportunity of opening a highway or opening up a path for them to
raise large number of issues and queries, and will be an exclusive target group for the students themselves. And that's very good. And I like this word, the Green Gurukul is a wonderful idea. And this is a concept which very much Dr. Premsi Jain, our mentor, who is and who has been our inspiration and a legion on his own, who has built up the whole green building movement of the country, who has done and had the greatest pleasure of associated and working with him, along with him, in the growth of the green building movement in this country. As a matter of fact, since the word sustainable development has been raised so many times, all of you should understand that when the whole world brought out the sustainable development goal to the year 2030 in 2015, it was Dr. Jain, all the 193 countries joining in that, and they are given an idea for 15 years what should be done from 2015 to 2030 of doing everything that is sustainable, not only for the current generation, but also for the future generation. Use of all the natural and other resources in an optimum, efficient, equitable way by which we do not destroy the environment. At the same time, carry out development which are environment friendly, ecologically appropriate, energy saving. Each one of those parameters become important. Just like the Panchbhutas that we have, of all the natural elements that we have, be it in respect of the air or the fire, or Vayu, Agni, all those detailed, Jal, Vayu, Agni, each one of them, and we add upon those dimensions of utilizing these resources in a big way. And Dr. Jain, under his leadership, brought in as part of the National Building Code, many may not know that the National Building Code of India 2016 version, if you see, there's a part 12 added, it's called Approach to Sustainability. I would very strongly recommend to all the young students of architecture who are participating in this particular group there to should have a good read of the particular. It's part of the regulatory document, and mind you, the building code is a very important, comprehensive document which gives guidance on all facets. The whole document has been done under his chairmanship. I was a member of that committee also, but that's the first document which has come anywhere in the world. 1 year after the 2015 September decision, 2016, the sustainability chapter got added. And therefore, based on that, you build up the principles of sustainable development in the built environment, which will have integrated water management, integrated energy management, integrated waste management, and the right type of greening of the thing, use of the land and the environments in the proper way. And most importantly, as a result of all that, it will also come down to reduction of the carbon footprint in a large way. And that's a real goal now we are all up to. How do you bring down the carbon footprint, less and less of carbon dioxide into the air, and those which contribute to more and more of the greenhouse gas emissions, how to reduce those particular one, etc., are part of the larger agenda coming. And ever since we did that, we actually gave a lead to the whole world with a new chapter which come over there. And mind you, that's about 5 years now. 2016, that document of the NBC came over there, and therefore the approach to sustainability document has come very well. And today, when we are celebrating the World Environment Day, and which has got an interesting theme of ecosystem restoration. When you say ecosystem restoration, we are trying to indicate that means it has gone off balance till the green building movement started over there to bring back, to use all the natural resources in a very optimal way, be it the river or the water source or the forest or the timber and the other related requirement, or the various building materials you have to extract in a large way, or the production of the building material. Each one of them will contribute in this connection. And as young students of architecture, very happy that this is going to be lucky to have an exclusive session like this to happen at regular intervals. And first of all, let me congratulate the young ambassadors, Vishesh and Radhika and others. I had the opportunity to interact with most of the green ambassadors. They've been playing a stellar role by being still students towards the final year, etc. They're also helping to build a bridge between the students and the faculty as well as the industry in a large way. And these type of interactive sessions are very important. Today morning, we had, as part of the World Environment Day, what needs to be done.
what can be the one single thing which can drive everybody towards that agenda of ecosystem restoration, which actually would cover issues on energy, water, waste, and carbon footprint reduction, etc. And we want to do that. We had launched a net zero mission. If today is the World Environment Day, we had actually the World Earth Day on the April 22nd. I just, people also should know Earth Day is different from the Environment Day. So on the World Earth Day, the IGBC, which has been predominantly built up by Dr. Premsi Jain, with his illustrious work of spreading the green building movement. We call him the father of the green building movement here. I even call him the Bhishma Pitamaha for the green building movement, and the way in which has nurtured all these elements in a large way. And we have done this 28 odd rating systems. All of you should be aware of those rating systems, which we did indigenously for Indian needs and didn't copy from any of the American Green Building Council, anybody else. We did it for our needs, or 6 geoclimatological region of hot, humid, hot, arid, the cold region, the hot region, the temperate region. For each other needs over there, for the India's diverse needs over there, we evolved a rating system. We are 95% of the country has 95% of the period of the year. We have the clear design sky available as against standard overcast sky, which is there in Europe, as well as England and in US and Canada, where based on which their rating systems were evolved. Whereas we are lucky that we have got the Surya Bhagavan available to give us the energy in a large way, to give the light to us, the energy for us, and how do you harness those particular things to become an important component. And therefore, the rating system that we have evolved has also helped to deal with that. And we also feel that each of the buildings, they have different types of requirements, be it on the light or energy or water, for a hotel or a hospital or a school or residence or an office or a factory. So we get a distinct rating system, unlike other rating agents who keep the same rating system for applicable to all different types of user needs, which we cannot do that. So I'm very happy that we have been able to do that over a period of time. Just for information, not to talk to shop, that we are very happy that as a result of all this good work that has been done by the IGBC for the last 20 years time period, we are the leading one. We deal with more than 90% of all the rating systems, the rating in India, remaining, of course, partly done by the USGBC's lead rating and partly done by the Terry Graha rating, and another one more rating is available. We are about 93%. But what is important is that we are able to save energy to the extent about 35 to 45%. Very, very important. So that's the important aspect of the green build. We are able to save water for about 25 to 35% as a result of the integrated water management initiative. We are also able to ensure that the waste minimization and how do you utilize all that waste to wealth, refuse to resource, or trash to cash. How do you convert each one of them at the construction site and related area? How do you deal with that in the built environment becomes an important aspect. And I'm very happy that you will be having series of interactive sessions coming over there, and the initiative therefore taken by Payal, and I'm glad that Preeti is there to anchor this particular program to get the best out of each one of you. All I want to do is make the best wishes of this, and two messages which I want to give for Dr. P.C. Jain, Premsi Jain. The students are an important category. Are you aware, even at the age of 82, when he was still going to the School of Planning and Architecture to say a session, students in SAP School of Architecture and Planning would still say his sessions were the most interesting one. And therefore, that's one is that the students level, we did phenomenal large thing for architectural students. Here, design ideas competition each year done. We get the best of the architectural students coming from different colleges to participate even in our annual building congress. We have a special niche for the school students. Each year, the Green Year Schools is another major one, which is reaching out to the younger generation, because if the younger generation get all these ideas on how to take care of sustainable development in a large way, I'm sure over the next 5 years, 10 years time period, they are the one going to occupy important places as part of a designer's office, or in a construction company, or in a builder's company, or a developer's company, or as a practicing architect, or part of a team along with the MEPF consultant. Is a multidisciplinary area of work.
you should understand, being young architects, also to know some aspects of a little amount of electrical energy or mechanical air conditioning related system, cooling and ventilation, a little amount of the energy related thing, because saving of energy means a lot of action, because passive design, which architects do, plus active design, all the installation people, the lift installation, air conditioning installation, your power installation, electrical installation, each one will bring that. And therefore, understand these dimensions on water, on energy, on services become an equally important component. I'm sure those multi-dimensions you will get an idea to understand. And a good architect will be the one, he's the best master coordinator. I'm very happy to just tell you in a few minutes from now, I'll be leaving you. We are going to have a historic memorandum of understanding we signed by the president of the Indian Institute of Architects. You have about 135,000 architects now. All of you will become one of the architects when you graduate. So we are going to have the memorandum of understanding for the Indian Green Building Council along with the Indian Institute of Architects, because as part of the architectural profession, how can green building and sustainable development aspect be part of the process in that, and which in turn will be getting into the curriculum and all development process. And what PJMT is doing through the Green Gurukul is making you understand all those finer aspects, making you user-friendly on that, to create awareness level, appreciation level, and application. You should understand what are all the elements of sustainable development, how does it lead to green building. And as Dr. Jain's vision was, unlike other green building councils, about 70 in the world available, they did only green building, a building to be green, but he went beyond green building to green built environment, namely a series of building along with the infrastructure. So you get onto a small amount of layout, or you get onto a campus, or you get onto a neighborhood, or you get onto a sub-city, or you go to city level. We are rating available not only for the green building, but also green built environment. I'm very happy that some of the new green cities that we have, or the smart cities that we have, they're also covered by the green building rating. And also rating coming into the urban mobility component, namely, how do you reach from your living area or work area or education area to other place? Mobility becomes an important component. Therefore, railway stations, metro stations, airport, all have become green. So when you say green as a component, I want you to understand the amount of impact that we have been able to make in the whole built environment. So right word is built environment, which will cover large amount of buildings of different asset classes, plus also the type of infrastructure developed on the same. I shouldn't take more time. All I want to do is wish you all the very best. Maybe one of the Green Gurukul, which comes later, I will also address and take the Q&A at that particular point of time, maybe a month or two later. Definitely I'll join Payal, and I'll work along with you on that. I want to thank you very much. Give my very best wishes to all the bright young students and all the good speakers. You got wonderful speakers today coming for the session on that. And I'm sure each one of us will be, one of you will be very eager, looking forward to the sessions going to be there from our star speakers, and each one of them in their own way, they are wonderful. I have heard each one of them. I'm sure you're going to benefit out of that. And once again, my very best wishes, and I want to congratulate Payal for the fantastic lead being taken to do deals that, even though we do a lot of work with the IGBC student chapter, we in all architecture schools we have about 305 IGBC student chapters there. Yesterday we inaugurated another student chapter there, because they are at the level of interaction with the faculty and student with larger seminars. But this Green Gurukul is what I feel is more getting down to the touching at the grassroots level with the students, and students themselves wanting to raise the question, as Payal rightly articulated. That's an important one. They have 100 questions to ask on that, and that a fresh inquisitive mind is important. If you're able to ignite the mind of the young ones with all these fresh ideas, I'm sure they themselves will come with the right level of response needed for the sustainable built environment. So once again, all the very best wishes, and thank you, Payal, for calling me, and Preeti, all the very best for your program. Thank you, Sureshi.
Preeti, Thank please. you so much, Suresh sir. Thank you Yeah. so much for your kind wisdom words. And this was really enlightening Yeah. keynote session delivered by you. I'm actually receiving a lot of questions, and we would be sharing that with you. Looking at the Yeah, time, I'll be and most happy to respond to that. Definitely, I'll do that. yes. Okay. Thank you. Now I would like to invite Mr. Sandeep Naran, consultant, sustainable construction practices, With your with a permission, can I take leave? With your yes, sir. permission, can I take leave? Surely, Thank sir. you. Thank you Thank so you. much for taking your Thank precious you. Thank time. you. Yeah. So moving ahead, Mr. Sandeep Narang is a seasoned experience of 30 years, and sir is a respected and well-known veteran within the real estate community in our country. He's a champion of affordable housing and an expert in sustainability in the built environment. He is associated and a champion of affordable housing. He's associated with the IGBC as IGBC Green Fellow, IGBC AP, and a member of IGBC Western UP Chapter Core Committee, with SOCHAM as a senior advisor and co-chair for student activities, CGEM Council for Green and Eco-Friendly Movement, and he consults projects on prudent usage of resources and helps project teams to meet their green targets. Sandeep ji is currently working on projects with a deep social impact where he is using his experience and knowledge to develop a blueprint for zero wastage project sites to follow the path of sustainable construction practices in the construction phase. So, welcome Sandeep Narangji. It is an honor to have you today, sir. Thank you. And so happy memories of Gurukul. I remember we started with this term with Dr. Premsi Jain sir. So whenever Dr. Jain will visit institutes for inauguration of student chapters or for other programs of Green Building Congress, students will just मैं अब हिंदी में बोलूँगा क्योंकि कानपुर में बच्चे I have been to Access College, तो यहाँ कानपुर में बच्चों को हिंदी में भी बातचीत में हमें की थी हमने इनके साथ. तो इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं सर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे और सर को कार में बैठने में 1 से 1.5 घंटा कई बार लग जाता था. तो आई यूज टू टेल डॉक्टर साहब कि साहब ये ना जैसे शांति निकेतन में गुरुकुल होता था, ऐसे बच्चे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं. I don't know whether Vishesh was there when we launched the student chapter of Vastukala. That was one of the Gurukul sessions we had. We named it Gurukul session at Vastukala. And when Yatendra and I were talking about how this program should go about, then I suggested one of these names, if this can be possible. This is one of the tribute to Dr. Saab on World Environment Day. Coming to involvement of students, I have seen few questions coming from students. I shouldn't be wasting time over here talking about what's sustainability, and let the experts Ashu and Anurag answer to students. At the same time, I will like to tell students that both Ashu and Anurag are very much into the domain of training students on energy efficiency and green buildings. So for green careers, I wish students could ask about the opportunities of green careers to Ashu and Anurag during this session. So I will stop here, and I wish everyone wonderful day and all the best. Thank you. Thank you so much, sir. Now, moving ahead, I would like to invite Professor Ashish Malik ji, Director of Access Colleges, Kanpur, under which 8 colleges of engineering, architecture, fashion designing, pharmacy, and management. Professor Ashish Malik is the alumnus of Thapa University, Patiala. He has 17 years of experience in teaching, also industry and the research. He published more than 34 research papers with international. 5 मिनट देंगे मुझे इसके लिए. With I would request everyone kindly mute yourself. Dr. Ashish Malik has published more than 34 research papers with international journals and conferences, with 16 SCI and SCUS indexes journal. He has
3 Indian patent and 1 Australian patent for his innovative products development. He's a chartered engineer and associated with various professional societies like IEI, ISTE, SESI, and in addition to this, he's a Secretary General with the Solar Energy Society of India. I would like to invite Professor Ashish Malik. I hope Dr. Saab Good is afternoon, there. everyone. Good afternoon, sir. We can hear you. Okay, thank you, ma'am. वी सुरेश जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने मतलब इतने बिजी शेड्यूल में से एक्सेस और पीजीएमटी के लिए टाइम निकाला। पायल जी का, आशु जी का, नारंग जी का और प्रीति जी आपका, जिन्होंने मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही बताना चाहूंगा कि भाई एक्सेस हमेशा से ही सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करता रहा है और आगे भी करेगा, जिसके लिए आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके लिए जो आज का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव एक्सेस ने स्टार्ट किया है, नो प्लास्टिक यूज इन आवर कैंपस, जिसका ऑफिस ऑर्डर आज निकल गया है। आने वाले समय में एक्सेस में कोई भी प्लास्टिक मटेरियल यूज नहीं होगा, ना शॉपिंग बैग्स और ना ही किसी भी पर्पस के लिए प्लास्टिक यूज होगा। प्लस जो दूसरा इनिशिएटिव हमारा स्टार्ट हुआ है, हमारा अदर वेंचर्स में हम अपनी बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग की सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और जल्द ही हम एक नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैंपस में ही, एक नई बिल्डिंग, जिसके लिए भी हम ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। जो हमारे इनिशियल छोटे छोटे स्टेप आज जो हमने डिसाइड करे हैं, प्लस अपने फैशन के स्टूडेंट्स के लिए हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, ताकि स्टूडेंट का ओरिएंटेशन सस्टेनेबिलिटी के लिए क्लियर हो सके और फ्यूचर रेडी हमारे इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स हो सके। तो इतना ही मैं समय लूंगा एक्सेस के लिए, आपके लिए, ताकि आगे का प्रोग्राम हम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू ऑल। Thank you so much, Professor Ashish. This was really short and crisp and really nice to know. आपका इतना जितने भी आपने काम शुरू किए हैं ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्पेशली जब आपने बोला कि प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स को आपने जो है रूल बनाया है कि एक्सेस कॉलेजेस में तो यूज़ नहीं होंगे, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से दरिया भरता है। सो दिस इज द स्मॉल इनिशिएटिव विच इज गोइंग टू motivate all of us, not only these students, but it is going to inspire all of us, people, those who are watching us on different social handles, also to start from home. We should also stop using plastic bags at home also. So, a true inspiration, sir. Thank you so much. Without taking much of the time, I'd like to start with our panelists now. And in today's panel, I like to quickly introduce you, dear friends. You already know Payal ji. She is among one of our prominent panelists today. And we have Mr. Ashu Gupta, co-founder, Design to Occupancy Services LLP. Mr. Ashu Gupta is a mechanical engineer and he's a very active volunteer in various building engineering societies like ISHRE, ASHRE, FSAI, IAQA, IBPSA, and many more at local, national, as well as international level. He's working a lot on green and sustainable environment. He is an IGBC, AP, PAQ, GEM, CP, and BE certified ECBC master trainer. And Ashu Gupta ji has also trained many people, more than 8,000 architects, engineers, consultants, and government officials about energy conservation and building codes. For his contribution, he received many awards, just to name few: Rajasthan Energy Conservation Award, Uttar Pradesh Energy Conservation Award, and Developing Leader Award by ASHRE. So, welcome Ashu ji. Now, I like to introduce the other Institute of Technology, Roorkee, and MBA degree in Finance from IMT Ghaziabad. His work assignments include working with NTPC and BMPTC, BHEL, CPWD,
PWD, USAID, and railways and metros, etc., etc. He's a certified measurement and verification professional, CMVP by AEE, a certified Greha evaluator, IGBC AP, and ECBC expert impaneled with Bureau of Energy Efficiency, also serving as a board member of International Building Performance and Simulation Association and a member of core committee of SEEN India. And also Gupta ji has also previously worked with Siemens Power and worked on many projects. So lovely to have all the eminent panelists, Payal ji, Ashu ji, and Ashish ji. Payal ji would like to add on something if I missed on anything, please. No, Preeti, I think you've covered it. I do want to thank Ashu and Anurag for taking out the time for being here. Thank you. And I do see a lot of questions from students, so I think we should begin with that now. Yeah, Anxiously waiting to. actually, yes. So lovely. First question I like to ask to Mr. Ashu Gupta. This question has been asked by Atit Niyaz, who is a Bachelor of Architecture first year student. Now, Atif is asking us, is it possible to develop sustainable environment friendly construction with the concept of smart cities and green building and social housing policy? Absolutely sure, Preeti ji. Thank you so much. First of all, I think I thanks to again PJMT because EC Jain sir was very close to me, and whenever he come to Jaipur, he always stay in MNIT, and I was the one that who was learning so much from him. So it is always a great pleasure to part of the PJMT. Second time I'm speaking on this platform, and thank you so much to all the students who are attending. First of all, I want to say. आप लोगों को जो आई थिंक द रीजन आई एम टेलिंग यू कि आज जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम करने वाले हैं आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे को हम जानते हैं, बट मैं आपको थोड़ा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को, सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने जैन सर से समझा था, मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वो हमेशा उसको एक मदर अर्थ कहा करते थे, माँ कहते थे कि जब हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं। गाइस, आज हम नो डाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई एक दिन नहीं है जिस दिन हम सेलिब्रेट करें, हर रोज हम रोज बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग या जो भी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एनवायरनमेंट की, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर हमें याद रखने हैं, जिसको मैं आई विल कम अप दिस क्वेश्चन। 5 एलिमेंट्स है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। दीज आर द 5 मेजर एलिमेंट्स जिनको हमें बिल्डिंग्स को बनाते वक्त में या सिटीज को बनाते वक्त में जितना हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, that building and that city will be the more green or sustainable. Now to come to the question कि आपने पूछा कि ऐसे कुछ materials हैं जो हम smart cities में बना सकते हैं। Definitely, already ये काफी चल रहा है। जब मैंने अपना career start किया था 2008 में, मैं engineer निकला, it was the biggest recession that time, and the Lehman Brothers was out और jobs नहीं थी, and everyone was focusing की conservation की तरफ, तो कोई सोचता नहीं था, हर कोई सोचता था generation की तरफ कि हमें energy, nuclear power plant, thermal power plant, but very few people were thinking on the conservation side, and very few companies actually who were green. And I'm very happy the people now understand कि green का मतलब green paint नहीं होता, या green का मतलब more landscaping नहीं होता। This has been, I have seen last 13 years में, मेरे career में मैंने काफी changes देखे हैं। जब भी हम बात करते हैं कि tier 2-3 cities में मैं जब जाता हूँ, travel करता हूँ trainings के लिए, the people has changed now they understand. So स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाने हैं, कॉन्सेप्ट यही था कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को, ऐसे इनोवेशंस को लेके आए जो सस्टेनेबल हो। एंड इसमें हम चाहे एनर्जी की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, और चाहे हम मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज की बात करें, और ये स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले हम जो रेड ब्रिक यूज करते थे कंस्ट्रक्शन करने में, बहुत यूज होता था, वो बिल्कुल हम जमीन में जो मिट्टी होती थी, सॉइल को हम पॉल्यूट करे थे। ऑफ कोर्स ऐसी कुछ सॉइल्स हैं जो हमारी टॉप लेयर्स होती है सॉइल की, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, दैट इज अ फर्टाइल सॉइल, एंड रेड ब्रिक में हम उसको यूज किए जाते थे। लेकिन जब से, और एक तरफ हम दूसरी तरफ देखते थे, जब हम पावर प्लांट में जब हम एनर्जी बनाते हैं तो एक रेसिड्यू बच जाता है जिसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। सो लोगों ने सोचा कि एक तरफ तो वेस्ट निकल रहा है और एक तरफ हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, व्हाई कांट वी मेक अ फ्लाई ऐश ब्रिक और द ब्लॉक्स।
तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आई और लोगों ने इसको सिटीज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में लेते गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पिछले 13-14 सालों में मैंने खुद यूज अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किए हैं, जो मुझे लगता था शायद ये पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज को दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आई वाज डूइंग वन प्रोजेक्ट इज अ 5-स्टार होटल इन दिल्ली ओनली, एंड पहले उस वहां पे हम बहुत फूड का वेस्ट होता था बिकॉज ऑफ द रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्वेट होता है। तो जब वो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट अभी क्या होता है कि अभी जनरली मोस्ट ऑफ द जगह कॉन्सेप्ट है कि हम पिगरीज को भेज देते हैं कि पिगरीज में वो वेस्ट चला जाता है। बट सम स्टार्टअप्स केम इन अ माइंड की 5-7 ईयर्स, और हमने देखा है 20-30 सालों से कि एक बायोगैस प्लांट्स होते हैं कि बड़े बड़े जो गोबर गैस प्लांट्स हम बोलते हैं, क्यों ना हम इसको पोर्टेबल मोड पे कर सकें। पोर्टेबल मोड पे बिल्डिंग लेवल पे हम बना सकते हैं कि हम उससे गैस ही बने, क्योंकि उसी होटल में हमें किचन में गैस चाहिए और उसी होटल से वो वेस्ट निकल रहा है। सो कांट वी पुट दैट एंटायर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और उसको कन्वर्ट करके हम बायोगैस बना के उसको कन्वर्ट करें एलपीजी के मीथेन गैस में। सो दिस वाज वी डिड, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उस होटल के अंदर अगर जो अप्रोक्सीमेट 800-900 केजी रोज वेस्ट निकलता था, 4 सिलेंडर गैस के हम बना पाते हैं रोज के। सो दीज काइंड ऑफ द इनिशिएटिव्स have we already, lot of technologies are coming up. Government is also coming. I was since morning, because आज ट्विटर पे केवल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो रहा है। आई एम वेरी एक्टिव ऑन द ट्विटर साइट, तो आई वाज लुकिंग ऑन देयर कि इतनी टेक्नोलॉजीज को आज, जैसे कंट्रीज की बात करें, जितने भी नॉर्वे कंट्रीज हैं, दे आर डूइंग द स्टार्टअप्स टू फंडिंग की न्यू टेक्नोलॉजीज कम टू द स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज हैपनिंग गाइज। अभी आप भी, क्योंकि आप यू ऑल आर द यंग जनरेशन, आप द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज कि सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग मटेरियल्स का बहुत बड़ा स्कोप है, जो अभी भी इंडिया में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, आउट ऑफ द 100% कंस्ट्रक्शन, द 5% इज द ग्रीन कंस्ट्रक्शन, 95% potential is there, and we all have to work toward the construction material. So there is already happening, but still a lot of things are required, seizing innovative. So I think, Preeti ji, I covered my answer in that way to explain. So over to you. थैंक यू सो मच आशु जी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आपने बहुत, कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात आपने हमें समझाई है। थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस्टर अनुराग बाजपेयी, और ये क्वेश्चन हमसे किया है राधिका अग्रवाल ने, जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। हाउ टू सेट बाउंड्रीज बिटवीन द कॉस्ट, time, quality and sustainability performance criteria in sustainable construction projects? Very interesting question to you, sir. Anurag Bajpai, sir. थैंक यू प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीजीएमटी का एंड आईजीबीसी एक्सेस कॉलेजेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच a dialogue between the industry and the academia. And I also personally believe the fact कि इस तरह के प्रोग्राम्स जितने ज़्यादा होंगे, उतनी शायद यंग जनरेशन और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, और शायद यंग जनरेशन आगे आएगी तो जो हम लोग बात करते हैं बार बार कि ये समय कैसे आएगा, चीज़ें कैसे चेंज होंगी, ये जो विविधा में हम लोग बार बार फंस जाते हैं, इतनी जल्दी समय बढ़ेगा, कितनी जल्दी होगा, कितनी जल्दी, तो ये सब चीज़ें शायद यंग जनरेशन को अवेयर करने और इन्फॉर्म करने, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने का जो प्रोग्राम जो पीजीएमटी कर रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट। बहुत बहुत प्रशंसनीय काम है, और सर्टनली डॉक्टर जैन का जो विजन है उसको एस्टैब्लिश करना, उसके हिसाब से काम करना। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज यू हैव मेंशन्ड प्रीति जी। तो राधिका ने जो बोला है कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस जो क्राइटेरिया हैं, उनकी बाउंड्री कैसे सेट करें। देखिए, कोई भी अगर प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल देख लें, तो पहले डिज़ाइन होता है, उसके बाद उसमें डिज़ाइनर्स का रोल है, उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्टर हायर होता है तो कॉन्ट्रैक्टर का रोल है, और फिर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस होती है, और फिर फाइनल कंस्ट्रक्शन होने के बाद में वो हैंडओवर हो जाता है ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट को और ओनर को। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है कि प्रोजेक्ट शुरू हो करके, कॉन्सेप्चुलाइज हो करके, और उसको कैसे हम शेप दें, जो ओनर के दिमाग में जो छवि है उसके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के वो किस हिसाब से डेवलप करें।
और यहाँ पे आकर के ये 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो शायद टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम एक एसेंस की तरह है। टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी है, ये हम सब लोग इस चीज को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का होटल बन रहा है तो जल्दी अगर बन जाएगा तो उसकी होटल की अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर ऑफिस बन जाएगा जल्दी तो उसकी ऑफिस का रेंट आने लगेगा। अगर कोई अपने सेल्फ यूज के लिए भी जा रहा है, घर भी बना रहा है, तो भी उसके लिए कहीं ना कहीं उसका अपना जो यूसेज है वो जल्दी हो सकता है। और इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हम सब लोग को उस इमीडिएट पार्ट के हिसाब से ध्यान रखना होता है कि आज के टाइम में जब हम लोग कैपेक्स की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स की बात करते हैं। कैपेक्स के लिए हम सब लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं क्योंकि वो इमीडिएट खर्चा है हमारे लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है उस मैथमेटिक्स को या उस इक्वेशन को समझना कि हमारा कैपेक्स क्या है और ओपेक्स क्या है। बहुत ज्यादा कैपेक्स खर्च कर देंगे तो सर्टेनली हमारे लिए जो ओपेक्स है वो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत कम कैपेक्स खर्च करेंगे तो हमारे लिए जो ओपेक्स है वो बहुत सारा समय ले लेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना है। क्वालिटी, क्वालिटी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमारे लिए जो स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है, हमारे जो डिजाइन हो रही है उसकी क्वालिटी ऑफ ड्राइंग कैसी है, उसकी सर्विसेज कैसी है, हमारे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वो किस हिसाब से डाइल्यूट नहीं हो करके डिटेल्ड या मान्यूट लेवल पे उन्होंने डिटेलिंग की है। जो साइट पे लोग काम कर रहे हैं वो किस हिसाब से अवेयर हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, किसी भी मटेरियल को कैसे यूज करना है, कहाँ पे किस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना है, कैसे गलत काम ना हो, ये सब चीजों के लिए एक क्वालिटी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबिलिटी, दो मैंने इस शब्द को सबसे बाद में यूज किया, बट देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे एक कॉन्शियसनेस की बात आती है वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी सबसे पहले लोग यूज करते हैं, देन ऑल द पैरामीटर्स दे कम लेटर। बट कहीं ना कहीं हमारे लिए जो बाउंड्री कंडीशन है जो राधिका ने पूछा है, वो बाउंड्री कंडीशंस कैसे डिफाइन करें, सर्टेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट फोर्थ ऑन द फर्स्ट स्टेप। तो कहीं हमारे लिए टाइम अगर एसेंस है तो हम टाइम को सबसे प्रायोरिटी वर्क देंगे। और जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऐसा इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड करता है वो सर्टेनली एज आई सेड कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, दे विल डिफाइन इट कि प्रायोरिटी किस चीज की सबसे ज्यादा है, एंड प्रायोरिटी इज समथिंग व्हिच सर्टेनली हैज बीन डिफाइंड बाय द लीडरशिप। और उसके बाद में टाइम एंड कमिटमेंट और सस्टेनेबिलिटी की जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूशन के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, दे डिफाइन इट। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी और टाइम इन दोनों में से एक चीज आनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्वालिटी का कंपोनेंट आना चाहिए, और उसके बाद इसमें कॉस्ट का कंपोनेंट आना चाहिए। एज आई सेड कि कॉस्ट एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें कि हम लोग कॉन्शियसली डिजाइन करें तो कैपेक्स वर्सेस अपेक्स में हमेशा ही आप एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तो टाइम फर्स्ट, सस्टेनेबिलिटी सेकंड, और सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट, टाइम सेकंड, क्वालिटी थर्ड एंड कॉस्ट फोर्थ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसकी बाउंड्री इस रेट में, इस ऑर्डर में सेट होनी चाहिए। और बाउंड्रीज की जो डेफिनेशन है वो हमेशा ही प्रायोरिटी बेसिस पे है, प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, ये सब चीजें डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करती हैं। संदीप नारंग जी लीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अपने आप में बड़े एक्सपर्ट हैं, इंडिया में काम करते रहे हैं। वो इस चीज को बहुत भाली बात समझते भी हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल व्हिच सेट दिस प्रोसेस इन प्लेस कि ये बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करनी चाहिए। ओवर टू यू प्रीति। Thank you so much, Anurag sir. It was really nice knowing. बहुत crisp answer था आपका. I'm sure students को अपने काफी जवाब मिल रहे होंगे. We are receiving a lot of questions and we would love to take all those questions maybe after the session. My next question goes to Payal Jain ji. Payal ji, I have been asked two questions here which I would like to merge both the questions because it is very much relevant to each other. एक हमसे सवाल किया है आयुषी ने जो फैशन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की हैं. आयुषी पूछती है प्लीज डिफाइन सस्टेनेबल फैब्रिक एंड व्हाट आर सम challenges with sustainable fashion and how to overcome them.
And second question, which is asked by Ashwini from the second year fashion diploma only. The trend of fast fashion is increasing today. So how can we be more sustainable in fast fashion? Okay, मुझे बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं Yes, and I'd Payal love to answer all of them. बहुत सारे फैशन रिलेटेड सवाल हैं. ji. I'm very happy यहाँ पे हैं फैशन स्टूडेंट्स. आई थिंक एक चीज जो आप लोगों को नॉर्मली फैशन स्कूल्स में, आई डोंट नो एक्सेस का करिकुलम कैसा है और आपको क्या सिखाया जा रहा है, बट सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग जो फैशन के साथ साथ हाथ में हाथ पकड़ के चल सकती है. एक किसी और स्टूडेंट का सवाल था कि फैशन एंड सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल ऑपोजिट हैं. दैट इज नॉट ट्रू. इट्स लाइक सेइंग कि बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तक आपने सोचा नहीं है इसके बारे में. यस, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट ट्रू. आपके नेचुरल यार्न्स हजारों सालों से हैं. गांधी जी ने खादी वीव किया था, दैट वाज टोटली सस्टेनेबल. तो आज के फैशन में और 50 साल या 100 साल या 500 साल पुराने फैशन में कोई फर्क नहीं था. जब आपके मुगल किंग्स थे, उनके सारे फैब्रिक सिल्क या वूल छोटे छोटे हैंडलूम्स पे बनाए जाते थे. तो सब कुछ सस्टेनेबल था. जैसे हमारा आर्किटेक्चर सस्टेनेबल था, वैसे ही हमारा पहनावा सस्टेनेबल था. हाँ, ये जरूर हुआ है कि पिछले 30-40 सालों में हम भूल गए हैं अपनी रूट्स. सो जैसे आशु ने कहा, जैसे धरती हमारी माँ है, सो फैशन में भी आपको वही प्रिंसिपल रखना चाहिए अपने दिमाग में कि आप एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं कर सकते. सो जब आप सस्टेनेबल फैब्रिक्स की बात, आपसे जैसे आपको हर आदमी ये पूछता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल. बहुत इजी टर्म है ये यूज करना कि ये हम नेचुरल फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको, व्हाट इज रियली सस्टेनेबल. सस्टेनेबल फैब्रिक्स अलग अलग तरह के होते हैं. यार्न्स, तो वो आपको यार्न पे जाना पड़ेगा. या तो वो रिसाइकल यार्न होगी, किसी और फैब्रिक को आप रिसाइकल करेंगे तो आपका पॉलिएस्टर भी सस्टेनेबल हो सकता है अगर रिसाइकल्ड हो. नायलॉन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, वूल हो सकता है. नेचुरल यार्न्स में आप अगर कॉटन वीव कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक कॉटन विल बी सस्टेनेबल, क्योंकि आपका वाटर कम यूज हो रहा है. यू आर रिसाइकलिंग अ लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स जो आप नॉर्मल कॉटन में नहीं करते. लिनन इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल. हेम्प, रैमी, अगर आप एनिमल बेस्ड फाइबर्स की बात करें तो ऐसे फाइबर्स जैसे कैशमेयर या अल्पाका जो बिना उन बर्ड्स या एनिमल्स को हर्ट किए बगैर बनाए जाते हैं. सो यू आर नॉट हर्टिंग एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. जैसे अहिंसा सिल्क है, where you don't kill the worm, तो those become sustainable. So जब आप sustainable fibers या yarns या fabrics की बात करते हैं, आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी. एक तो वो या तो natural हो या organic हो या recycled हो. दूसरा, जो डाइज और प्रिंटिंग टेक्निक्स यूज की गई हैं, नॉन केमिकल डाइज हो, प्रिंटिंग टेक्निक्स अगेन नेचुरल हो एज मच एज पॉसिबल. आजकल आप जो पहनते हैं, जो नॉर्मली आप फास्ट फैशन पहन रहे हैं, व्हिच वी कॉल, आप जारा में जाएंगे, H&M जाएंगे, यूल बाय, आप 5 बार पहनेंगे, आप कूड़े में फेंक देंगे या नहीं सोचेंगे उसके बारे में, कहीं आपके अलमारी में कहीं पड़ा रहेगा. वो लैंडफिल बनेगा, जरूर बनेगा. बट अब धीरे धीरे दैट इज चेंजिंग. आई थिंक पिछले 5 साल में बहुत सारे फैशन ब्रांड्स ने सस्टेनेबिलिटी को फोर फ्रंट में ले लिया है एंड दे आर फॉलोइंग इट. किसी और बच्चे का सवाल था कि हाई फैशन में, और जैसे लुई विटॉन एंड गुची एंड प्राडा एंड यू नो ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स आर नॉट सस्टेनेबल. आई डोंट एग्री. धीरे धीरे सब बदल रहे हैं, चाहे वो शनेल हो, चाहे बर्बरी हो, सब एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ला रहे हैं. अगर आप पढ़ना चाहें, स्टेला मैकार्टनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. आइलीन फिशर, ये अमेरिकन ब्रांड है. रैग एंड बोन, H&M की बहुत स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल डिविजन है. दे हैव अ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर. वो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ नेचुरल में जाने का, और नेचुरल में जरूरी नहीं है खाली कॉटन, सिल्क, लिनन और हेम्प हो. तो आजकल टेंसल आप सुनते होंगे बहुत, विस्कोस सुन रहे हैं, कुप्रो, दीज आर न्यू यार्न्स जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं. सो दीज आर ऑल सस्टेनेबल फैब्रिक्स, एंड फैशन एंड सस्टेनेबिलिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं. आपकी इंटेंशन होनी चाहिए. एज अ डिजाइनर मैंने 26-27 साल पहले अपना फैशन लेबल शुरू किया था.
और मेरा पर्सनल पैशन है नेचुरल फैब्रिक्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन क्राफ्ट जो 100% नेचुरल और सस्टेनेबल है. सो ना जानते हुए इस बारे में, नॉट एज अ कॉन्शियस चॉइस, लेकिन इट वाज समथिंग आई लव्ड, इसीलिए मैंने हमेशा नेचुरल यार्न्स यूज किए हैं. मेरे सारे फैब्रिक्स हैंडलूम्स में क्लस्टर्स में वीव होते हैं. सारी एम्ब्रॉयडरीज ओल्ड हेरिटेज एम्ब्रॉयडरीज हैं जो हजारों साल से चलती आ रही हैं, जो अभी भी लेडीज बैठ के अपने घरों में करती हैं. तो अगर आप फैशन स्टूडेंट्स हैं तो एक पार्ट है आपको सस्टेनेबल यार्न्स और फाइबर्स यूज करना, दूसरा है इंडियन टेक्सटाइल और हेरिटेज को बरकरार रखना. एज अ डिजाइनर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग इंडियन, लिविंग इन इंडिया, हैविंग दिस ह्यूज इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज. अगर आप उसको हेल्प नहीं कर सकते किसी तरह तो वो खत्म हो जाएगी. पिछले 20 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्स देखे हैं जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं. एंड ये अकेले एक डिजाइनर की जर्नी नहीं है, सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा इसमें. एंड वी हैव टू टुगेदर बिलीव दैट वी कैन कीप दीज क्राफ्ट्स एंड प्रैक्टिसेस अलाइव. सिंपल सा एग्जांपल है चिकनकारी. 20 साल पहले जब मैंने चिकनकारी के साथ काम करना शुरू किया था, हजारों का क्लस्टर्स होते थे और लाखों लेडीज होती थी जो घर में बैठ के करती थी. नेक्स्ट जनरेशन को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अब वो बहुत कम होते गए हैं. धीरे 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 अब मे बी मुश्किल से फ्यू हंड्रेड क्लस्टर्स रह गए हैं यूपी में. उसमें भी द एवरेज एज है जो लेडीज की विल बी 30+. अंडर 30 वो नहीं जानते, वो अपनी वो कला ही नहीं जानते, वो जानते ही नहीं है कि चिकनकारी कैसे होती थी, कैसे होती है. वो और चीजें करते हैं, वो इंटरनेट पे हैं, वो दे आर ऑन गूगल, दे आर ऑन सोशल मीडिया, वो नहीं सीखना चाहते. सो इट इज अ फास्ट वैनिशिंग ट्रेडिशन इन इंडिया. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग रिवाइव कर सकते हैं अपने करियर्स में. जब आप निकलेंगे बाहर, जब आप काम करेंगे, ये कांस्टेंट एफर्ट है और ये हर डिजाइनर का, हर क्रिएटिव पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई फील आप अपना एवरी ड्रॉप इन द ओशन काउंट्स. आई बिलीव दैट. सो आई विल स्टॉप एट दैट. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक मैंने काफी सारे सवाल एड्रेस कर लिए हैं इन दिस वन. Thank you so much, Payal ji. Aapka, this was not just an answer. I think it was a very inspirational quote which you have made over here. You have actually put all of us to think. Of course, when we go and buy clothes, and especially in last 1 year, though all of us are struggling with the COVID pandemic, we've learned that less is more. Minimalism is one thing, but we must practice. And then, of course, what is suited to our skin, what gives us more comfort, is the best for us. So, what we need is cotton, good food to eat. So, it's better we go organic and sattvic, which is actually the balance of life. And thank you so much for inspiring all of us, mentioning that. We must respect our roots, and we must go back to the roots and nurture it, otherwise it will vanish. Can I And add my one more thing, Preeti? I wanted to say, please ma'am. जब आप फास्ट फैशन की बात कर रहे हैं, तो दिस फास्ट फैशन किसी और का नहीं है, हम सब इस पे पार्ट हैं. हम जाते हैं, खरीदते हैं और वो भूल जाते हैं उसके बारे में. आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट. इस लॉकडाउन में आप सबने अपनी वार्डरोब्स देखी होंगी, सबने निकाले होंगे वो चीजें जो कभी नहीं पहनी थी, बहुत सालों से पड़ी हुई थी. प्लीज रिसाइकल देम. आप डिजाइन स्टूडेंट्स हैं, आप उनको री इन्वेंट कर सकते हैं, रिसाइकल, अपस्किल, अपसाइकल कर सकते हैं. अपनी पुरानी जीन्स को काटिए, उसका कुछ और बनाइए. मेक अ कोलाज, मेक मास्क. अगर आपके पास कॉटन, ऑफ कोर्स सिंथेटिक के मास्क मत बनाइएगा प्लीज, अगर आपके पास नेचुरल फैब्रिक्स हैं, ब्रीदेबल फैब्रिक्स हैं, मेक मास्क आउट ऑफ देम. यूज योर क्रिएटिविटी. आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए टू री इन्वेंट आवरसेल्व्स. अगर हमें लगता था अच्छा हमें अब नेक्स्ट फंक्शन में जाना है, हम जाके कुछ खरीदें, नहीं, आप नहीं खरीदिए. बीइंग इन द बिजनेस, आई एम स्टिल सेइंग, आप मत खरीदिए. आप जो आपके पास है उसको रीइन्वेंट करिए, उसको अलग तरह से पहनिए, उसको कट करिए, एडिट करिए, सो करिए, व्हाटएवर यू वांट, बट मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ इट. दैट इज रियली क्रिएटिव. Wow, lovely. So recycle is the key, friends, and like Payal ji rightly mentioned that all of us are the creative beings. और अगर honestly हम अपने wardrobe देखें तो बहुत सब चीजें हैं जो हमने शायद पिछले 1-1.5 साल से देखी भी नहीं है.
So it's better, we can buy more and more, there's no end to it, but then recycling is the key to practice now. Now going ahead with the next question, I'm coming to you, Ashuji, with this question which is asked by Ashwini from the Fashion Diploma second year. Ashwini is asking, how can we promote sustainable fashion at low cost, as a sustainable fashion the uh, comes the factor of high price. So Right. what they are trying to say, like, we are promoting khadi, we are promoting organic clothes, and this is true. You know, when we start purchasing, the sustainable fabric is costlier as compared to polyester and other synthetic material which is available, sir. I think Payalji will be the right panelist for this question, because, but I want to highlight regarding for the sustainable in fashion industry, because I have been associated with some of the factories, like some of the students asking कि Zara H&M में sustainability क्या हो रहा है. So I want to highlight, guys, the world is changing and you have to understood कि अभी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज पूरे वर्ल्ड में. एंड इस वजह से हर कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है, दे हैड टू गो विद द कार्बन न्यूट्रल by the mid of the century. Most of the countries has taken 2050, 2060. They're talking about the circular economy, and most of the textile industries are talking about in that direction for the circular economy. Because we, as a company, I'm working with several projects in Bangladesh, and I have seen there is a garment association which is called BGMEA. I have seen in last 5 years the way why the Bangladesh textile industry is growing in a big way. If you go any country in the world, you will find the most of the fabric from the made in Bangladesh. The reason I'm talking you, because those factories are opting the sustainable approach. Whatever the construction they are doing, जो भी वहाँ develop करते हैं कोई factory, चाहे वो स्वेटर बन रहा है, चाहे वो jeans बन रही है, they try to find out a solution that building or the factory should be a green in that way. Because अभी H&M, Zara, इन सारी बड़ी बड़ी organizations ने अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बिकॉज जब हम कार्बन न्यूट्रल की बात करते हैं, कार्बन न्यूट्रल कोई बिल्डिंग को नहीं होता, कार्बन न्यूट्रल इज एंटायर प्रोसेस कि उस कंपनी का जो सप्लाई चेन है वो भी सस्टेनेबल है या नहीं है. एंड दैट इज समथिंग आई हैव रियलाइज्ड कि पिछले 5 सालों में बांग्लादेश कंट्री में हम सोचते थे कि उस कंट्री में शायद इतना ग्रोथ नहीं होगा. अनुराग विल बी इको विद मी. वी हैव सीन द मोर देन 800 प्रोजेक्ट्स, 800 garment factory projects registered under the Green Building Council, because of that movement is coming up. And उनकी पूरी उस country की economy majorly depend on the textile business. So which I know regarding for the textile, the change is happening. Still in India, it is a lot of movement required, because I know very few textile companies which are green. We need to focus. There's a lot of potential in India too, but with Vietnam and Bangladesh is taking a lot of initiative in that way. So I think, Anurag, you can add up in that, because you have a prior experience of that working. What do you, Anurag? Thank you, Ashu. I think the question is very valid, and maybe I think I'll just juxtapose the situation with the other reference. If, for example, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, इट इज प्रीटी मच लाइक द सेम थिंग जहाँ पे हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं. ऑर्गेनिक फूड भी आज के टाइम में बहुत महंगा है. इट इज वेरी कॉस्टली. इट इज नॉट इन रीच ऑफ ऑल द पीपल. लेकिन व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जब हम पोस्ट इंडस्ट्रियस सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास फूड पैकेट्स में आता है, वहाँ पे हम मास स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं. सर्टेनली वो मास स्केल होने के कारण कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कॉस्ट उसकी कम हो गई है. इसी कारण से ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक टेक्सटाइल आज के टाइम में महंगे हैं. कल को हो सकता है अगर हम एज एन इंडिविजुअल इस चीज को, हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, सब लोग यही मांगे, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी और फिर शायद इसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी और कम हो जाएगी. Ashu, you have mentioned very clearly and very rightly that when there is a demand in Bangladesh that we have seen in last 5 to 8 years, it has rose to the level जहाँ पे हम लोग शायद कभी सोचते नहीं थे बांग्लादेश में इतने प्रोजेक्ट्स होंगे. Now we see the Bangladesh is shining like a star there in terms of RMG sector getting rated, getting highlighted as a sustainable sector there. So certainly I think demand is one thing which will define everything. तो कहीं ना कहीं हम सब लोग अगर इस चीज को अडॉप्ट करने लगेंगे तो शायद इस चीज की अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी. Anurag, if I may add to this, जो आपने डिमांड की बात करी, you know, I do a lot of export
US export बहुत करते हैं हम breadth, high fashion, sort of mid fashion diffusion lines में, and पिछले 6 महीने में जितनी inquiries आ रही हैं are all for organic. Everything is for organic. So we have completely changed our entire setup in terms of sourcing organic. Matlab, of course, we were always doing organic fabrics, but not organic printing and not organic dyeing in that sense, because वो outsource होता है. वो हम obviously अपने आप in house तो नहीं करते हैं. And it has increased. I cannot tell you how much. It is times 100 the inquiries for organic. So आप next 3 months में देखेंगे India will be one of the largest exporters of organic cotton garments at least. I don't know about fabrics and yarns, but सब printing facilities के पास वो certifications हैं, सारे manufacturers organic fabrics produce कर रहे हैं, so the demand already exists. Now it's just question कि India कितनी जल्दी ramp up करता है. But you're right, Bangladesh is ahead and बहुत काम हो रहा है बांग्लादेश में. I know हमने वो South Asian conference करी थी पिछले साल, and they are way ahead. मतलब वो already ये सब R&D कर चुके थे pre-COVID. उनकी सारी factories already sorted थी. India is still one step behind, but nevertheless, I think हम भी पहुंच जाएंगे वहाँ पे. Sure, Payal ji. Yes. Back to you, Preeti. Payal ji, I have a very interesting question to ask, and though I have a lot of questions given by the students, but I can't stop myself asking this since we are on the same taglines what we're discussing about sustainable living, connecting with the nature, green building, and today we are celebrating World Environment Day. So sustainable living and connecting with nature, how does these two work together when we talk about like especially all of us are living in a concrete jungle. Honestly speaking, when I come out of my building, what I see is buildings, buildings, and only buildings. And I'm going for a walk around the buildings, within the buildings. There's only buildings. So, what is your mantra to practice? Like as an individual, how do you, because you are taking the legacy ahead of Dr. Prem Chand. Now we also want to get inspired that you also doing a lot of things at one go. All of us are juggling between many roles today, right? So what is your mantra of sustainable living and connecting with nature? I think, as you rightly said, sustainable living is all about being with nature. I think I'm just lucky. I'm blessed कि I live with trees and birds and peacocks हैं मेरे आसपास और buildings नहीं हैं. So maybe it's that part of Delhi जहाँ बहुत greenery है. I think वैसे भी Delhi में we are lucky because अभी भी there are still a lot of trees, there are a lot of areas which are green. तो आपको really अगर sustainable living on a daily basis करनी है, definitely you have to eat more natural, organic, natural. Not to say I'm against non-veg or veg or any of that, but I think जो सात्विक way of living थी वो definitely ज़्यादा sustainable थी. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. आप जितना fast food अपनी body में डालेंगे या जितना fast fashion आप पहनेंगे, आपका end result वही होगा. Somebody has asked one of the students कि why are people very crazy about fast fashion? So this should be my question to the students कि क्यों आप फास्ट फैशन के लिए क्रेजी हैं, क्यों आप इतनी जल्दी रोज जाके नए कपड़े खरीदते हैं और हर वीकेंड आपको नए कपड़े पहनने होते हैं. अगर आप नहीं खरीदेंगे तो वो नहीं बेचेंगे. It's as simple as that. I like to add something, Payalji, since I've been doing a lot of sessions. I've done sessions, holistic wellness sessions with almost 20 colleges pan India, including Delhi University, Madhya Pradesh universities, and all. And I've been asking this: that what is that one thing which influences you so much? That picture you want to portray. So what I realize is they are so much influenced by becoming somebody else or showing up ki okay hum bhi cool hai, so that whole definition, someone who wears a khadi or a cotton is considered to be okay Gandhi ji ke zamane se, and someone who wears aaj ke fast fashion so called, so just to protect their cool image. I think it is changing, and I think also, and since I have Vishesh and Radhika, I'd like to hear from them. I don't think, guys, I mean, you are next generation.
आई डोंट, पहली बात फैशन बहुत मिस इंटरप्रेटेड, मिसअंडरस्टूड वर्ड है. सो जब लोग फैशन सुनते हैं वो सोचते हैं ये खाली फैंसी डिजाइनर्स हैं जो पेज 3 पे अपनी फोटो खिंचवाते हैं ग्लास ऑफ वाइन पकड़ के और कुछ नहीं करते, एंड वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और उनका और कोई काम नहीं है, वो घर बैठ के दे गेट रिच. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो है मे बी 2% ऑफ द 98% जो टाइम हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन, डेवलप, रिसर्च करने में लगाते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने ऐसा बना दिया है फैशन इंडस्ट्री को कि आपको लगता है कि डिजाइनर्स कुछ नहीं करते, दे आर जस्ट सपोज टू लुक गुड एंड बी हैप्पी. तो ऐसा नहीं है. बट आई थिंक पिछले 4-5 साल में आई एम सीइंग जो यंग डिजाइनर्स आ रहे हैं, अपने लेबल स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस. तो वो नेचुरल फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं अपनी रूट्स के लिए पे. एंड जैसे सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट्स होते थे, कांथा एम्ब्रॉयडरीज होती थी, कलमकारी, ये सब वापस रिवाइव हो रहा है. एंड राधिका, लेट्स हियर व्हाट इज योर टेक फैशन पे. What would you buy? Would you buy a t-shirt or will you buy a woven, hand block printed, cool, cami? I don't know. I want to know. Ma'am, for me, I'm always a t-shirt type person. What is comfortable for me, that's always a priority. So I usually don't buy very much stuff from the market. I create my own sense of style, layering 2-3 clothes together and give it a different look. But do you think when you buy, do you think कि ये sustainable है या नहीं है, ये polyester है या natural है? Do you think about it or it doesn't matter? Ma'am, initially, actually, I don't think about that initially when I started buying my own clothes on my own. Because when I was young, my mom used to buy on behalf of me. But as I grown up and as I know what is sustainability and how things can be changed into different materials, and they can use in different purpose also. Like one material can be used on wearing also, and for some different purpose also. So now I took care of that before buying anything. So my answer is, the student who said that people are crazy about H&M and Zara, that is my question to you. जब आप लोग Zara में जाते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि ये नेचुरल है या ये सस्टेनेबल है या ये मेरी स्किन के लिए अच्छा है या प्लैनेट के लिए अच्छा है? नहीं. आपको जो बहुत कूल लगता है और जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा है और सोशल मीडिया पे देखा है और अपने कूल पॉप स्टार को पहने हुए देखा है, वो खरीदेंगे. सो ये पूरा जनरेशनल माइंडसेट बदलेगा तब उनका जो 50% सस्टेनेबल एजेंडा है अभी, वो 100% पे पहुंच जाएगा. What about Vishesh? What about you? You are earning, so you have your own money to spend. तो आप किस पे खर्च करेंगे अपने पैसे? So, ma'am, basically, to be honest, for me, it has always been I love wearing shirts, and it is all throughout the season. So it's, even if it's summer or winter, I wear shirts only. So for my sense, it would be, I don't buy 2 sets of clothing, not for winter and then for summer. It's just the standard set that I'm it's a through and through for me. I have it only. But does the sustainability of that product come to your mind or it doesn't? वो खाली आप बिल्डिंग में सोचते हैं और कपड़ों में नहीं सोचते. Yes, ma'am. और ma'am, दूसरा, considering the material, also the fabric. So we were talking about H&M. So it was just pre-COVID time. So I visited H&M only, and what they have launched is they have launched fashionable clothing, and it's moreover what there is, they have recycled section separate, which is equivalent to the current fashion, and it is even cheaper. And it is all the fabric that has been recycled. That's amazing to know. That's amazing to know that it's cheaper. And actually speaking, it is the same for us when we are manufacturing. Cost is marginal. Jaise Ashu, what you spoke about green buildings, at one time, 10 साल पहले, it was a huge difference. Non-green और green में. तो वो difference धीरे-धीरे bridge हो गया है. Fashion में भी या clothing में भी अब वो difference बहुत कम रह गया है. I don't think कम है. Maybe H&M is taking that hit. वो अपने ऊपर ले रहे हैं वो cost. I don't think कम है recycled and organic, but at least almost at par आ गया है. You'd like to add something? Sorry, Preeti, I've hijacked your session. Ma'am, one more thing I think I can add on. Sorry, but it would be considering the COVID scenario.
and we are all like at present also we are facing the lockdown. So the fashion scenario has come down to a level that we are more aiming towards is like what is comfortable and not towards the fashion. That is also another aspect that fashion is not at par at present, and what we should be considering should be is like what is more comfortable to us, what we feel good in. And That should be comfortable is always natural. If you think about it, अगर वो natural yarn होगी तो वैसे भी आपके लिए ज़्यादा comfortable होगी. Ashu, you were going to say something? I was saying that I think I just want to mix up the fashion thing. उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूँगा as an engineering point of view perspective, because whenever as an air conditioning we design, हमेशा ये बात जैन साहब भी सर बोलते थे कि हम जितनी भी सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस करते थे, द होटल टेम्परेचर मोस्टली द हैबिटेट सेंटर वगैरह में हमने काफी एक्टिविटीज की, द टेम्परेचर 22 डिग्री 23 डिग्री या 21 डिग्री हम रखते थे. एंड आई वांट टू हाईलाइट गाइस कि कितना इंपैक्ट करता है, बिकॉज समवन वाज आस्किंग कि हम क्या कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए. आप 1 डिग्री, आप जिस तरीके से जो कपड़े होते हैं, आई वुड से द एंटायर द व्हाट वी कैरी, समवन पोस्टेड कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो क्लोथ्स यूज करते हैं. somehow I feel कि why, because when these conferences happening, जो आपको comfortable होता है, the temperature definitely बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के कपड़े वो पहने हैं. और that is the reason आप अगर entire suit and everything में जाते हैं, you will need some kind of the comfort level कि आपको 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए. आपको जान के हैरानी होगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने से करीब 6% बिजली बढ़ जाती है. एज एन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए लोग, और हमारे देश में बहुत, मैंने जितने भी होटल्स में जाता हूँ, लोग 16 डिग्री 18 डिग्री का सेट पॉइंट रखते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच एनर्जी वी आर वेस्टिंग विद दैट. वी कैन सेव दैट एनर्जी एट अवर होम बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर, एंड वी आर द सेम कंट्री दैट हम जब हम ट्रेनों में सफर करते हैं 2 टायर 3 टायर एसी में, तो हमें ब्लैंकेट भी मिलता है, और जब जैसलमेर में 45 डिग्री बाहर है और हम ब्लैंकेट लेके उसमें सो रहे होते हैं. द रीजन, प्लीज अंडरस्टैंड, समथिंग इज मिसिंग वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ कंफर्टेबल की जो हमारे लिए बेस्ट कंफर्टेबल है, हमें वो यूटिलाइज करना चाहिए. सो जस्ट वांट टू ऐड अप पायल जी दिस थिंग बिकॉज आई फील समटाइम. थैंक यू. What do you, Preeti ji? It's getting so interesting, Ashu ji. I must say, I hope all our attendees are enjoying. Thank you so much, Vishesh and Radhika, for joining in. I would request our green ambassadors to ask any questions if they have from our eminent panel speakers. Can I go first, ma'am? Please. Good afternoon, Ashu sir. Good afternoon, Anurag sir. Like I'm a final year architecture student. I'll be finishing my internship in a week or 2. So what I'm focusing is towards my career in the field of sustainability only. So now I'm aiming for my master's. What would be a suitable course that I should be aiming for? Perfect. So I think Anurag, you are, as an architect, you can better explain, but I will add up for sure. Yes, Ashu, thank you. So Vishesh, as you have mentioned that you have completed or you are in the completion mode of your undergrad degree, और अभी आप मास्टर्स के लिए जाएंगे. So देखिए, there are so many opportunities. जैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी कंट्री अभी फेस कर रही है, then we have a lot of opportunities now. चाहे वो हम लोग बिल्डिंग सेक्टर की बात करें, जहाँ पे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एज ए वन एस्पेक्ट हो सकता है. हम लोग जब अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं प्राइमरली, देन स्मार्ट सिटी या अर्बन प्लानिंग में बहुत काम होना अभी बचा हुआ है इंडिया स्पेसिफिक में देखा जाए तो. लेट्स से यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट लाइक वर्जिन लैंड व्हिच इज अवेलेबल. देयर इज नथिंग व्हिच हैज बीन डन. देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आगे आए, बट दे आर नॉट in let's say full throttle speed पे नहीं चल रहे हैं. तो इसका मतलब है कि there are lot of activities which are to be done. तो इस तरह के जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे अर्बन प्लानिंग का स्कोप हो सकता है. where now third scope is where you apparently explore or can explore कि जहाँ पे minute level पे जहाँ पे simulations हो गए या इस तरह के जो areas हो गए where technical capacity बहुत ज़्यादा नहीं available है. आज के टाइम में भी इंडिया में बहुत सारा स्कोप है, बट वी स्टिल फील देयर इज लॉट ऑफ स्किल सेट व्हिच हैज टू बी देयर. तो एक ये सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन या हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग डिजाइन के कोर्सेस होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक है.
बिल्डिंग सेक्टर में या अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड और देखते हैं तो हम लोग अर्बन मोबिलिटी भी एक रिलेटेड एरिया है जो तेजी से आगे आ रहा है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि 2030 तक लगभग 30-40% जो रजिस्ट्रेशन है वो ई मोबिलिटी पे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड एरियाज हैं जो कि तुम्हें डिसाइड करने होंगे बेस्ड ऑन योर पैशन, योर इंटरेस्ट एंड योर अंडरस्टैंडिंग विद द सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ। बट मोटा मोटा इस तरह से ही सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आशु, यू कैन ऐड टू व्हाट। बस आई थिंक विशेष आई वांट टू ऐड अप हियर, जैसे कि प्रीति जी ने बताया, ये 10 साल क्लाइमेट चेंज के डिकेड है एंटायर, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस हैज टेकन दिस एंटायर डिकेड 2020 to 2030 is a climate change, we have to fight it. So there's a lot of opportunities in sustainable era which I have realized 13 years में India has a tremendous potential. There was a report in McKinsey which was showing in 2010 कि इंडिया केवल अभी 34% बना है, 66% बनना बाकी है। और वी हैव सीन कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी ग्रोथ होनी है। सो वी आर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड टारगेट बहुत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर हमने इसकी तरफ नहीं देखा, सो लोगों का टारगेट है कि 2070, आई वाज रीडिंग ऑन आर्टिकल कि 2070 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ेगा। बट अभी रिसेंटली रिपोर्ट एक देख पड़ी जिसमें बताया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अगर हम इसी तरह यूज करते रहे नेचुरल रिसोर्सेज को, so this day is not too far from us. So please focus in the, as an architect, come in the sustainable development era, and I think choose a lot of master courses are happening around the globe in this, so you can focus on that area. Thank you. Lovely. Thank you so much, Ashuji. Now I request our green ambassadors, Vishesh and Radhika. Please share what all green initiatives you're taking forward with Premchand Memorial Trust. Radhika, could you please share what all? Yeah, please go on. So just basically we'll give an introduction first of like at present to like for all the participants. At present, we are a team of 15 green ambassadors who are working with PGMD. So what we are aiming for is like we need to educate and also make people aware about the cause, the sustainability, what Premchand sir would preach, his love for students, and how sustainability is something that has to be followed in everyday life, and it is not a matter of like celebrating an event only. But at PGMT, what we are aiming for is like a cleaner and a greener world. And and now coming over to the present, the event that we are taking forward is like for the Earth Day celebration this month. We have planned out it in a month-long event. So we had a couple of events in it, like a cleanliness drive. The cleanliness drive was basically based upon before and after challenge. In this, the participants were requested to take a small patch of land or small areas which are like nearby their homes, and they can work upon a small park, plotting, like parking lots, footpaths, anything, and they could like share their pictures, and we would just appreciate. It would be an appreciation from PGMT side. We can share it on the PGMT Instagram handle. And similarly, we had done for the plantation drive, in which we had asked the participants to share the pictures of the sapling, and then the seed, and then it converting into a sapling of like a month-long journey of a plant. And then coming over to the another event that we had was doodling, comic strips, videos, and GIF making. It was completely done by the Green Ambassadors. What we were planning is for like considering all the videos, GIFs, doodling, artwork. These artworks are more relatable and people can understand it much better. So what our target audience is not only like fixed. We have a wide range of age groups which we are catering to. Also all people from different professional backgrounds. So and also considering all these artwork, they have a long lasting impact on our minds. So that has already been shared on the Instagram handle. Probably Radhika would take forward the rest of the events. Thank you, Yeah, Vishesh. sure. Yeah. So, as Vishesh has mentioned, there are many campaigns that we organized, and some of them like Eco Happiness Challenge,
So it basically focuses on in this pandemic situation being at home, but we should not feel isolated from our nature or our surroundings. So we encourage people so that they can like uh, plan their balcony into a mini garden, or just have a virtual tour with their kids at night before when they tell stories to them. So it could be a eco happiness connected to nature, but being at home. We not encourage people to go out in this era. And next challenge was a meme challenge. Like last year, people were very productive on social media in different aspects. So we hope using that hype and trend, we try to create humor and amusing informative memes so that people can enjoy and moreover participate in it also. They it could be more informative and people will engage more easily. Similar challenge was create music. It is like therapy, where participants were required to create soothing musical compositions using merge, trim, overlap, or features like video editing. It required their skills also and connected to the nature, like sound recorded of birds chirping, wind blowing, and the water flowing around them. That could be recorded and send it to us, which we will share on our social media handle also. And we also promote a wish list where people were required to reduce, and Radhika, I recycle. feel sorry to cut. We are losing, I think we are running out of time. So we will ask people to follow us on social media, on our social media handles. And we hope that more students will join us. So thank you guys. Sorry that we are running out of time, I think, and everybody has other sessions to get on. Yes. So I won't, I'll hand it back to Preeti. But Vishesh, Radhika, thank you. Thank you for sharing. And we hope और भी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे को लिखेंगे जो बनना चाहेंगे ग्रीन एम्बेसडर्स. एज जैसे आपने देखा, दे आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क. और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, सो यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दीज कैंपेन्स व्हिच आर गोइंग ऑन. Over to you, Preeti. Maybe Preeti, if I can request Thank you you, to ma'am. close with a holistic view on sustainability, which is Sattva Nation's mantra anyways. Sure, Thank you. sure. Thank you so much. So, thank you so much, Vishesh and Radhika. You have started a great initiative, and I really like that eco virtual initiative and the idea, because we cannot move out. All of us have to be home to be safe. But that's a very interesting and a great idea. And thank you so much to all the prominent panelists. My special thanks to V. Suresh sir. He's not there. Thank you so much, Sandeep sir, Mr. Anurag Bajpai, Mr. Ashu, Dr. Ashish, and the whole team of Prem Jain Memorial Trust. पायल जी, आप सूत्रधार हैं आज के प्रोग्राम के, तो आपका तो बहुत बहुत आभार नहीं, है. आप है प्रीति, Now, you are as you thank you. So, since you asked me to share few details of holistic wellness, now I have founded Sattva Nation with a vision that we misinterrupt the concept of wellness, limiting it only to the physical fitness. So, holistic wellness includes 8 categories, which has physical wellness, mental wellness, emotional, intellectual wellness, financial wellness, occupational wellness, spiritual wellness, and of course, environmental wellness, which is very, very important part. When we are connected, like Ashuji mentioned when we started the panel discussion, Agni, Jal, Prithvi, Vayu, Akash. If you see, all of us are made of these 5 elements. And when we are rooted, when we are connected with these 5 elements, we are sorted as human beings. The moment we disconnect, और कहते हैं ना वो संतुलन जहाँ पे बिगड़ता है, वहाँ पे we will really have to pay the price, like we are paying the price of whatever we have done with Mother Nature. So please respect Mother Nature. We call it Mother because it showers unconditional love to us. And I like to invite Payal ji for the closing remarks now.
And to all of you, stay Sattva, stay blessed. Yes, thank you very much. Thank you, everybody. Had a wonderful session of the first Green Gurukul. Thank you, Green Ambassadors, for suggesting, for being part. Ashish ji, thank you very much. बहुत अच्छा लगा, आपके बहुत enthusiastic students थे, बहुत सारे सवाल. हम सब सवालों का जवाब नहीं दे पाए, but they can write to us. I'm sure Ashu, Anurag, and I will be happy to answer. बाद में भी हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं. जितने हो सके, I saw everybody was trying to answer the questions, but if we are left, well, hold your breath for the next session. We'll be back soon. Thank you very much from PJMT. Thank you, everybody. Thank you for being with us. Namaskar. Thank you, everyone. Namaskar. Thank you.